परिश्रम 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 आमे परिश्रम करिबा एवं क्लास करिबा एवं पूरा 100 मार्क्स 100 मार्क को आमे पूरा देखिबा एवं 100 मार्क रो क्वेश्चन आलोचना करिबा। तेणु समस्ते मो सांगे धैर्यर सहित शेष पर्यंत बसिबे एटा तुमको गोटे माने रिक्वेस्ट करुच्ची कहीं आमे बुझीबा मु परिश्रम करी तुम सहित तमें भी टिके परिश्रम करिवो। तेणु आउ अल्प दिन रहिला परीक्षा देखंतु एठी 100 मार्क रो प्रश्न इंग्राजी रो ठीक अछि। तेणु एटा प्रथम प्रश्न देखंतु कौन कौन प्रश्न आसे तमें भी जानी परिबो क्वेश्चन पैटर्न जानी परिबो एवं कौन कौन प्रश्न केमिति आंसर करबा ट्रिक्स गुड़िक मध्य जानी परिबो। देखिए प्रथम प्रश्न होची कौन ना एटा रीड थ्रू द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट माने एटा गोटे पैसेज जोटा कि तुमर गद्य रु आसी अछि। तेणु गद्य हो पद्य हो कोठु आसी किंतु एटा गद्य रु आसी। तेणु प्रेस्क्राइब टेस्ट लिखाई तुमर इनविटेशन 1 रु आसी। तेणु एठी देख को माने चैप्टर रु आसी। ए चैप्टर टी होची कोन द मैजिक ऑफ टीम वर्क साम पिट्रोडांकर मैजिक ऑफ टीम वर्क। देखिबा एटा को तुमको कौन करिया को पड़िबो क्वेश्चन पढ़ी करी आंसर करिया पड़िबो किंतु छोटिया पैराग्राफ टे अछि आमे टिके बुझी दबा नहीं। कौन लिखिचंती सान पिट्रोडा ना आई हैड ए ड्राइवर नेम्ड राम। मोर गोटे ड्राइवर थिला नहीं तार ना होची राम। ओके हु आई थॉट जहाँ को मु भावे जे वाज वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स इन द वर्ल्ड। पृथ्वीर गोटे बेस्ट ड्राइवर होची राम। किए भावुतले ना साम पिट्रोडा द ऑथर भावुतले। ही यूज्ड टू ओपन द डोर फॉर मी ओके व्हेनेवर ही एंटर्ड और एग्जिटेड द कार। जेते बेले भी से कार टिको जेते बेले भी से कार टिको कोठी की लगाए किंबा बाहर को आने किंबा भीतर को निए से सबु बेले मो पाई कौन ना डोर टी खोली दे। ओके टू ओपन द डोर फॉर मी मोर डोर टी को सम्मान सहकारे खोली दिए ठीक अच्छे। राइट इन द फर्स्ट फ्यू डेज राइट इन द फर्स्ट फ्यू डेज तो प्रथम केते दिन रे आई टोल्ड हिम केते दिन पर आई टोल्ड हिम मु तुमको कहली राम भाई राम भी कहते कौन राम भाई कौन ना यू आर नॉट गोइंग टू ओपन द डोर फॉर मी आज तमें मो पाई आउ ये डोर खोलिबो नाही। ओके जे मु बाहरी भी मो डोर टी खोलिबो नहीं डोर माने कौन कबाटटी फाटकटी खोलिबो कार फाटकटी यू कैन डू दैट तमें यह करि परिबो केबे ना इफ आई लूज माय हैंड्स मु जदि मो हाथ दीटा जदि चली जाए हाथ दीटा जदि चली जाए ताहले तमें खोलिबो ठीक अछि। माने से केते सम्मान दबा पई चाहुचंती ठीक अछि। राम ऑलमोस्ट स्टार्टेड क्राइंग। राम पूरा ए सुनिकी पूरा बाबूंकर ए कथा सुनिकी पूरा कांदीबार लागिला। ही सेड सर व्हाट आर यू सेइंग कोड कहउचंती आपण दिस इज माय जॉब मोर कामो एटा मु माने कोन माने रखिकी कार रखिकी फाटकटी खोलिबी आपनको पाई। आई टोल्ड हिम दैट आई डिडंट वांट टू ट्रीट हिम लाइक ए मियर ड्राइवर। से कहले कोन माने ऑथर कहचंती तांको कहले जे आई डिडंट वांट मु चाहूनी टू ट्रीट हिम तांको एई भली माने दबा पाई ट्रीट करबा पाई कोन लाइक ए मियर ड्राइवर केवल गोटे ड्राइवर भाबरे मु तांको केबे भी देखी नाही। ही हैड टू बिकम ए टीम प्लेयर तमें गोटे टीम प्लेयर होबो तो गोटे टीम प्लेयर ओके टीम प्लेयर लीडर भावर देखी टीम प्लेयर भावर देखी टीम आमर टीम रो तमें गोटे प्लेयर ओके। आई टोल्ड हिम व्हाट व्हेनेवर आई टोल्ड हिम दैट तांको कहिले कौन ना व्हेनेवर ही वाज नॉट ड्राइविंग से कौन माने कारटा लगे देखी कार भितर बसी थांती। तेणु जिते बेले भी तुम ड्राइविंग करूनो यू शुड कम इनटू ऑफिस तमें ऑफिस को आस एंड हेल्प आउट विथ ऑफिस वर्क। तेणु ऑफिस वर्क रे ऑफिस काम रे टिके हेल्प करो। मेक कॉपीज कॉपीज माने कौन ये जो खाता तैयारी करो। फाइल पेपर गुड़े को साइज की रखो। सेंड फैक्स को सेंड करो। आंसर फोन कॉल भी आंसर दियो और सिंपली रीड किमा किछि पढ़ो रेदर देन सीट इन द कार खाली कार रे बसंतुनी एंड वेट फॉर मी टू शो अप ओके तेणु वेट फॉर मी टू शो अप। तेणु मते
वेट करिकी अपेक्षा करिकी केवल कार न बसिकी आसिकी काम कर तुमे भी टीम प्लेयर हो बोली से भावती केते सुंदर कथा नहीं मैजिक ऑफ टीम वर्क। तो क्वेश्चन गुड़िक देखीदबा सर व्हाट आर यू सेइंग दिस इज माय जॉब हु सेड दिस एंड व्हाई कौन ना राम भाई नहीं कि राम सेड दिस आगे लिखिदेव सर व्हाट आर यू सेइंग दिस इज माय जॉब एटा को जेमती लिखाई सेमती लिखिदेव हु सेड दिस कौन लिखिबो ना राम द ड्राइवर ऑफ द ऑथर said this and why कहीं ना when the writer okay कौन when the writer forbade माने मना कले राम not to open the door for him which he could not do राम said so ठीक अच्छे राम से कहले नहीं कि आम पढ़िले थ्रो लाइट ऑन राइटर्स व्यू ऑन हिज ड्राइवर तो राइटर्स व्यू ऑन हिज ड्राइवर उपरे कौन कहते राइटर कौन कहले ना इन द राइटर्स व्यू राम इज द ड्राइवर कौन ये पूरा कहते राम इज द कौन वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स इन द वर्ल्ड से कहते यहाँ लिखिदेव राम इज द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स ऑफ द वर्ल्ड ओके एंड वर्ल्ड तापर कौन लिखिंट ना से लिखिंट ही वॉज ड्यूटीफुल टू द कोर माने ही वॉज ए मैन ऑफ ड्यूटीज ही इज ए ड्यूटीफुल मैन ड्यूटीफुल तार ड्यूटी भल भाव करे ओके यहाँ कहते तापर प्रश्न देखा नेक्स्ट तृतीय प्रश्न यू कैन डू दैट इफ आई लूज माई हैंड्स व्हाट डज दैट रेफर टू यू कैन डू दैट माने कौन ये यहाँ को लिखिदेव इनवर्टेड भितर जहाँ रही लिख कौन ना तुम लिख द दैट रेफर्स टू द राइटर्स ऑर्डर ओके ऑर्डर टू हिज ड्राइवर नॉट टू ओपन द डोर फॉर हिम ओके दैट माने जहाँ कहले ओके दैट रेफर्स टू रेफर माने कौन दैट माने कौन ओके दैट रेफर्स टू लिख राइटर्स ऑर्डर और राइटर्स सेइंग to his driver not to open the door for him okay तापर देखो give an account of the writer encouraging Ram to play the role of a team player okay give an account बुझे कि लिख the writer encouraging केमती writer encourage करूचंते राम को से कहचंती in order to play his role as a team player okay तो कौन कहचंती the writer encouraged him कौन केमिति encourage him तो कहचंती जे to participate in the office वर्क रे अंशग्रहण करने मेकिंग कॉपीज सेंडिंग फैक्स एटा सब लिखाई ना ये ओके केमिति सी माने राइटर हैज एनकरेज फाइल पेपर्स एंड सेंड फैक्सेस आंसर फोन्स एटसेट्रा ठीक अच्छे एमती इनकरेज करछंती एंड ही टोल्ड राम टू बी द कौन टू बी द लीडर टीम प्लेयर ओके अच्छा यहाँ एनकरेज करछंती नेक्स्ट देखो हाउ डिड द ड्राइवर रिएक्ट व्हेन द राइटर आस्क्ड हिम नॉट टू ओपन द डोर फॉर हिम हाउ डिड द ड्राइवर रिएक्ट ड्राइवर केमिति रिएक्ट कले जितेबाला राइटर कहले जे मो पाई तमे आउ डोर खोलिबो नाही तालो कौन को लिखिब व्हेन द राइटर आस्क्ड द ड्राइवर नॉट टू ओपन द डोर फॉर हिम ड्राइवर कौन कला कांदी पकेला नहीं ड्राइवर स्टार्टेड क्राइंग नहीं कौन लिखिब ड्राइवर राम कौन कले ड्राइवर राम started crying नहीं कि and he said sir what are you saying this is my job and he said that okay he said that is माने opening the door is his job बोली लिखिदेव ठीक अच्छे इनडायरेक्टली लिखिब ठीक अच्छे अच्छा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करके लिखो तापर देखो यहाँ देख आर्ट इज लॉन्ग टाइम इज स्प्लिटिंग एटा कौटू आसी एटा आई साम ऑफ लाइफ रू नहीं कि साम ऑफ लाइफ रू कौन प्रश्न अच्छी देखा व्हाट डज द पोएट से अबाउट टाइम समय उपरे पोएट कौन कहते समय उपरे आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग बोली कहते ताले कौन फ्लिटिंग माने कौन टाइम इज फ्लिटिंग माने कौन टाइम इज ट्रांजिटोरी माने कौन ट्रांजिटोरी TRAN मन रखता ट्रांजिटोरी SITORY ट्रांजिटोरी माने कौन माने अल्प समय
माने पळै जाउछे ट्रांजिटोरी माने समयटा काहाको अपेक्षा करन ट्रांजिटोरी इट इज ए कंटिन्यूअस फ्लो टाइम इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग फ्लिटिंग माने कोन कंटिन्यूअसली फ्लोइंग समय पळै जाउछे तेणु वी मस्ट रिमेंबर दैट टाइम इज फ्लिटिंग ओके एंड वी मस्ट वर्क द नोबल वर्क ओके वी मस्ट डू आवर नोबल ड्यूटी और नोबल वर्क ठीक अच्छे एटा लिखिबो तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डज द पोएट एडवाइज अस नॉट टू ट्रस्ट फ्यूचर तो पोएट एडवाइस उपदेश देइचंती जे नॉट टू ट्रस्ट फ्यूचर फ्यूचर को ट्रस्ट करिबो नाही व्हाई काहे की नहीं तुम लिखिबो सेमतिया द पोएट एडवाइसेस अस ओके कहना माने थर्ड पर्सन सिंगुलर द पोएट लिखाई तेणु एडवाइसेस अस नॉट टू ट्रस्ट द फ्यूचर बिकॉज द फ्यूचर मे बी रोजी ओके ये लिखाई देख फ्यूचर को कहीं ये करबनी बोली देख ओके ट्रस्ट नो फ्यूचर लिखाई ट्रस्ट नो फ्यूचर ये लिखाई ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर बी प्लीजेंट ओके ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर इट बी प्लेजेंट तो से कहते बिकॉज it may be rosy, it may be pleasant, the future may be pleasant, yet you should not what we should not कौन करिबा उचित we should not trust the future, we should not trust the future because it is uncertain माने uncertain uncertain माने कौन uncertain माने अनिर्दिष्ट कई देखी कि फ्यूचर को अनिर्दिष्ट जे विश्वास मु करी व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ जीवन रियलिटी कौन सत्यता कौन रियलिटी ऑफ लाइफ कौन अकॉर्डिंग टू द पोएट रियलिटी ऑफ लाइफ कौन तो रियलिटी ऑफ लाइफ कौन कहते ओके कौन कहते हाँ रियलिटी ऑफ लाइफ कहते आक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट रियलिटी इज कौन एक्शन इन द प्रेजेंट दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ बोली कहते एक्शन इन द प्रेजेंट वर्तमान रे काम करी चलो दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ बोली से कहते आ रियलिटी ऑफ लाइफ कौन ना हार्ट विद इन द गॉड्स ओवर मीन्स माने बिलीव योरसेल्फ एंड बिलीव गॉड व्हिच इज एबव एंड गॉड एंड बिलीव योरसेल्फ यू आर द हार्ट विद इन ठीक अच्छे तापर देखिबा नेक्स्ट How does the poet give contrasting picture of art and time? Art out time को केमती contrasting picture देइचंती art out time को से कहचंती art is long art माने एठी कर्म को कहा जाउची माने हमर वर्क टा सबु दिन पय रह जाय so the contrast between art and time is that art is deathless आमर वर्क आमर डिट्स गुड़ाक डिट्स माने कर्म ओके डिट्स DEEDS ओके मन रखिबो DEDS डिट्स माने कर्म तो डिट्स आर लॉन्ग माने आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम किंतु समय पड़े जाउची बट टाइम इज फ्लीटिंग तो आर्ट इज डेथलेस आर्ट इज इमोर्टल बट टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीबॉडी एमती वर्णना करछंती लास्ट प्रश्न देखिबा What does the line in the world's broad field of battle signify? In the world's broad field कथा कौन लिखिछंती ओके कौन कथा कहछंती अरे broad field in the life's broad field लिखिछंती कौन in the world's broad field of battle in the bivouac of life bivouac माने transitory life for the time being okay temporary life okay be not like dump driven cattle से कहचंती हीरो होबा पई कहचंती से कहचंती in the world's broad field of battle signifies कौन life is like a temporary camp जेमती कि युद्ध क्षेत्र टेम्पोरारी कैंप रे रहंती किछि दिन पर युद्ध सरी गले टेम्पोरारी कैंप रो अंत हो जाए से बोली द टेम्पोरारी कैंप इन द वास्ट बैटल फील्ड लाइफ इज लाइक ए bivouac माने लाइफ इज लाइक ए टेम्पोरारी कैंप इन द वास्ट बैटलफील्ड वेयर द टायर्ड सोल्जर्स टेक रेस्ट जो टायर्ड सोल्जर क्लांत पूर्ण सोल्जर से माने टेकिंग करती सो कौन ना वी हैव टू वर्क लाइक ए हीरो
वर्क लाइक ए हीरो इन दिस स्ट्रगल ऑफ लाइफ बोली कहते। ठीक अच्छे। अच्छा बढ़िया लगी निहाती। तापर देखा ये आमर जो तुम नॉन डिटेल स्टोरी अच्छी स्टडी अच्छी जो स्टोरी रू तुम कौटू आना माई मदर रू आसी। ओके माई मदर रू तो आम कौन करवा आगे क्वेश्चन टी पढ़ीदे। हाउ डज द राइटर पोर्ट्रे द रेवरेंड ऑफ चर्च। तो रेवरेंड किए ना रेवरेंड होते प्रीस्ट चर्च। ओके तांको विषय राइटर कौन केमिति वर्णना करिसेंती एठी देख आमे प्रथम रु पढ़िले जना पड़िबो। तेणु एठी मीन व्हाइल फ्रॉम 3 कंफर्टेबल रूम्स वी मूव्ड into 2 then into 1 our belongings dwindling and the neighborhood into which we moved growing progressively drabber. She turned to religion माने किए सी माने मदर कथा कहते इन द होप माने आशा रे कौन ना आई सपोज दैट इट वुड रिस्टोर द वॉइस। ओके तो वॉइस टाको माने आउ थे फेरी आसो। सी रेगुलरली अटेंडेड चर्च क्राइस्ट चर्च इन द कौटी चर्चटा थिला वेस्टमिनिस्टर ब्रिज रोड। ये जो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज रोड रे चर्च थिला एवं एवरी संडे सेठी सभा होतला। आई वाज मेड टू सीट थ्रो बैट्स ऑर्गन म्यूजिक माने ऑर्गन म्यूजिक पाखरे मते बसिबा को कजाउथला एंड टू लिसन विथ एक्टिंग इम्पेशेंस माने ए जो बाजुला के का करूथला माने मु अधैर्यर सहित सेठी बसी थाए टू द रेवरेंड एबी मायर्स। रेवरेंड एबी मायर्स किए ना सी होचंदी प्रीस्ट से चर्च रो। तो फर्वेंट एंड ड्रामाटिक वॉइस तांकर जो ड्रामाटिक वॉइस थिला केते सुंदर वॉइस। ओके इकोइंग डाउन द नेव इकोइंग डाउन इको होतला तांकर बहुत बढ़िया सुना जाउथला। ओके बहुत बढ़िया सुना जाउथला एंड फर्वेंट एंड ड्रामाटिक वॉइस इकोइंग डाउन द नेव माने से जो पूरा विस्तृत लॉन्ग रूम से जो रूम टी। ओके जो केंद्र स्थल थिला चर्च रो दीर्घ केंद्र स्थल सेटा पूरा माने आवाज आसुतला लाइक सफलिंग फीट। ओके ही इज लाइक सफलिंग फीट माने जंती गोड़ो घोसारी चलला बेले जंती शोभा जाओ से भलिया। तापर देखिबा हिज ओरेशन माने स्पीच तांकर जो स्पीच से दउथले वक्तृता दउथले मस्ट हैव बीन अपीलिंग बहुत माने हृदय टच कर जाउथला। फॉर ओकेजनली आई वुड कैच मदर क्वाइटली ओकेजनली मु देखे जे कौन बेले बेले देखे जे माई मदर क्वाइटली वाइपिंग अवे ए टीयर कांदी पकाउथले माई मदर। ओके व्हिच स्लाइटली एम्बारास्ड मी मते टिके लाज लागुथिला बुझी। तेणु एठी से आलोचना करिसेंती जो प्रीस्ट को ऊपर। तो प्रीस्ट कौन ना मु तुमको बुझे दूची। तेने प्रश्न अच्छी कौन ना रेवरेंड को ऊपर कौन लिखिचंती हाउ डज द राइटर पोर्ट्रे द रेवरेंड ऑफ द चर्च। तुम लिखिदेव रेवरेंड वाज द रेस्पेक्टेड प्रीस्ट ऑफ द चर्च। ओके चर्च कोठी थिला ना चर्च इन द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज रोड कोठी थिला ना वेस्टमिनिस्टर ब्रिज रोड रे चर्च थिला बुझिलो तमे। तेणु तमे लिखिदेल कौन ना रेवरेंड वाज द प्रीस्ट ऑफ द चर्च व्हिच वाज एट वेस्टमिनिस्टर ब्रिज रोड। ओके एंड ही रेड बाइबल तुम लिखिदेव बाइबल पढ़ुले एंड ही वाज डेलिवरिंग स्पीच एंड हिज वॉइस वाज वेरी स्मूथ एंड इकोइंग द होल हॉल ऑफ चर्च हॉल बुझी पारछ तो लिखि दे परिबो। ओके एंड वी वर लिसनिंग हिज गुड वॉइस विथ पेशेंस एमती लिखि दे परिबो। ठीक अच्छे तेणु यही तुमे तांको ऊपर लिखि दे परिबो। नेक्स्ट द्वितीय प्रश्नटा जोटा अच्छी तुमे कौन अच्छी ना थ्रो लाइट ऑन चैपलिन्स मदर। चैपलिन को माँ ऊपर माने कौन जानच लेख। ओके चैपलिन मदर तो ये लिखाई चैपलिन मदर माँ कौन ना सी जड़े रिलीजियन से सी टर्न टू रिलीजियन। तुम कौन लिखिबो ना मदर चैपलिन्स मदर वाज रिलीजियस। ओके चैपलिन्स मदर वाज रिलीजियस। ओके सी लुक टू रिलीजियन
hoping that it would bring back her original voice again. ତାଙ୍କର original voice, restore her original voice. ତାର ନିଜର voice, original voice को आउ थरे फेराई आनिबा पाई से कौन କରୁଥିଲେ से माने बारंबार रिलीजन को भल पाउतले एवं she was coming to church okay at Westminster Bridge Road. ठीक अछि. Frequently she was visiting church at Westminster Bridge Road every Sunday. लिखि दे परियो. She was very emotional and आउ कौन ना she was patiently listening the speech and the music of Reverend the priest of the church. बुझेला. तो आउ लिखि दे परिबो जे chaplain's mother ऊपर आउ कौन अच्छी देखिबा एठी. हाँ yes आउ कौन अच्छी देखिबा mother's Bible he was Reverend closed the Bible. Mother had joined the church. She seldom saw her. Yes आउ कौन अच्छी ना mother आउ भी तमें लिखि दे परिबो कौन ना तुम्हें खोजिले एठी पाई परिबो जे chaplain's mother was small, attractive and sensitive. Chaplain's mother was small, attractive and sensitive. Okay, in spite of facing untold suffering, she never lost hope. She hope तांकर आशा को केबे भी माने छाड़िलेनी. She was a woman with a lot of hope. Okay. तापर देखिबा नेक्स्ट अच्छी पैसेज अनसीन पैसेज तुमको कहिची जे तमे को जे जो क्वेश्चन आसीबो प्रथम से क्वेश्चन को पढ़िबो तापर अनसीन पैसेज को जीवो. ओके देखो व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेस फॉर कैंसर रो कौन पॉसिबल कॉज अच्छी कारण अच्छी तो फटाफट तमे पढ़िकरी तमे जानी परिबो. Did you know the most of us have a few cancer cells floating around in our bodies? आम देश माने देहरे ए भली कैंसर कौन जीवाणु गुड़िक अच्छी समस्त देहरे. At some point of time or the other they keep a lookout for a weak spot. से weak spot दुर्बल spot को देखती where they can begin their destruction. से माने आरंभ करिवे destruction. Our defense system begins to produce antibodies to destroy them. आमर जो डिफेंस सिस्टम बॉडी भीतर अच्छी से एंटीबॉडी तैयारी करे तांको डिस्ट्रॉय करिया पई कैंसर जीवाणु को. बट द मोमेंट दिस डिफेंस मेकानिज्म वीकेंस से डिफेंस मेकानिज्म जते वीक हे जानती दुर्बल हे जानती द कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई रैपिडली एंड डैमेज मेजर बॉडी ऑर्गन्स. कैंसर सेल माने मेजर बॉडी ऑर्गन को से माने कोन करंती माने डिस्ट्रॉय करबा आरंभ कर दियंती नै कि. तो कारण कोन ना इफ यू हैव बीन ईटिंग सेंसिबली you may get rid of these cancer causing cells and not even know that your body had them. Okay, so sensibly eating kariya ko padi ko hochi. Scientists said that difference between those who don't get cancer and those who do is a strong immune system. काहार कैंसर होची काहार कैंसर होनी जार कैंसर होची तांकर इम्यून सिस्टम कम अच्छी जार कैंसर होनी इम्यून सिस्टम बहुत कम माने भलो अच्छी. ओके with correct food habits intake and adequate vitamins minerals and antioxidants. Okay, the immune system does not work well in anyone who is undernourished. Okay, तो causes रो कारण कौन कारण गुड़िक ये लिखाई. तो कैंसर इज ए थ्रेट to our health for a long time and its incidence has increased in the industrial area coinciding with our increasingly toxic environment. तो कैंसर पाई कौन ये लिखि दिया गला कैंसर रो कॉजेस कौन ना कैंसर रो कॉजेस होची एठी दे इनकरेक्ट फूड हैबिट्स. ओके लिखि दे परिबो. ओके and not intaking of adequate vitamins and minerals नहीं कि आउ weak immune system एगा लिखि दे परिबो. तापर नेक्स्ट प्रश्न से भली आंसर करि परिबो. गिव एग्जांपल्स ऑफ हाईटेक वेस्ट को खोजिबो. हाईटेक वेस्ट कोठी अछि कोठी से शब्दटा अछि हाईटेक वेस्ट बोली कोठी अछि. ओके से शब्दटा को खोजिबा देखिबा. यस हाईटेक वेस्ट देखि परछो कोठी अछि
very good ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ओके allow in our own high tech waste of industrial pollutants ओके ताले कौन एठी कौन लिखा है देखिबा जे we allow in our own high tech waste of industrial pollutants so high tech waste industrial pollutants are the high tech waste ओके तेणु कौन कौन high tech waste ना electromagnetic radiation environmental toxins chemicals insect sprays agricultural pollutants alcohol tobacco drugs okay stress and internal toxins all are called high tech waste तो ठीक अच्छी तापर देखिबा एई भली भाबरे तुमे गोटी पर गोटी क्वेश्चन तुमे करि पारिबो ठीक अछि एठी वोकाबुलरी स्किल मध्ये ता सहित ऐड थिबो जेमति वोकाबुलरी स्किल सर्च मेनास सिग्निफिकेंट एथिरो कोन ना सर्च रो आउ गोटे सिनोनिम तुमको सिनोनिम माने सेम मीनिंग वाला वर्ड तुमको फाइंड आउट करिया पड़िबो जोटा अछि सर्च सेठी लुक आउट माने सर्च लुक आउट ओके सेठी थिबो लुक आउट मेनास मेनास माने थ्रेट THREAT थ्रेट सेठी थिबो सिग्निफिकेंट माने इंपोर्टेंट IMPORTANT इंपोर्टेंट तापर देखो एई जो दीटा को वर्ड को तुमको वाक्य व्यवहार करिया पड़े न्यूट्रिशन माने पोषण न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ लिख परिबो टॉक्सिन्स आर नॉट एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ लिख परिबो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स कॉज ग्रेट हार्म टू आवर हेल्थ नहीं कि एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स माने विष जोड़ा कि परिवेश रु बाहर ओके तापर देखो तुमर ये जो गोटे कौन टेबुल आसी टेबुलटा को बुझेकरी लिखा पड़ो टेबुल रे कौन देइछि ओके इनफॉरमेशन देइछि टेबुल रे कौन ना दिस टेबुल शोज द लीजर हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ भुवनेश्वर ठीक अच्छे सीधा सीधा यहाँ लिखिदेव टेबुल टी करदेव टेबुल कर सारा पर लिखब जे दिस टेबुल शोज द लीजर हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ भुवनेश्वर ठीक अच्छे लीजर हैबिट्स देयर आर mainly four numbers of leisure habits. One is books bought, then cinema attendance, then cable TV connection or picnics. The people they are what they are reading books and some people they are attending cinema and they are watching also the TV and they are going to picnics. So all are the leisure habits. Okay, so last year कितना था this year okay last year 1 this year 1.5 तो एगुड़ी को सब कौन लाख रे एगुड़ी को फिगर गिव इन द लाख तो तुम्हें लिखी देबो कौन last year 1 lakh books were bought by people 1 lakh books were bought by people bought माने कौन किनी थिले bought by people but this year 1.5 lakh okay but this year it increased to 1.5 lakh okay तापर एटा को पुणी देखिबो कोन ना there was a increase आमे देखिलु there was a similar rise in cable TV connection and cinema attendance रे भी बढ़ी चंदी ना नाही cinema attendance अच्छा cinema attendance रे कमी चंदी okay cinema attendance the people were attending cinema in the last year the people were attending cinema the number of people are कोन ना 3.5 lakh and this year it is 3.25 lakh and in cable TV connections the people the last year the people they connected their cable TV that is the numbers are 0.5 lakh and this year 50% increase in the cable TV connection that is 1 lakh okay and picnic रे भी बढ़ी चंती the picnic the people they chose picnic to go picnics in the last year it was 0.25 lakh and this year it increased to 0.35 lakh okay एमती लिखि देबो तेणु लेखिकी कंपेयर करिवो एवं कंपेयर करिकी लिखिबो जे सिनेमा is the highest leisure habit among the people of Bhubaneswar नहीं they like cinemas okay to watch cinema but book reading also has been increased as a leisure habit among them लिखि परिबो तापर देखो डिक्शनरी स्किल रे गोटे वर्ड अछि हेड ओके ए जो माने देखो पिला माने टिके लेट होची तेणु आमे माने लास्ट पर्यंत देखिबा आमे जदि संकल्प नैचे किछि करिबा जीवन रे
निश्चय आम इंग्राजी रे भल करवा तेणु मो सांगे पढ़ एवं आग को बढ़। देखा ये तो कौन ना हेड हेड जो वर्ड देची वर्ड रो हेड वर्ड रो मीनिंग पांचटा देची एवं सही हेड वर्ड को व्यवहार करा जायछि एठी। तेणु प्रत्येकटी हेड वर्ड व्यवहार करा जायछि अलग अलग मीनिंग अच्छी तेणु सही हेड को तुमको देखा पड़ो। ओके देखा मीनिंग गुड़िक पढ़ीदबा। हेड प्रथम हेड माने होची योर माइंड एंड थॉट्स। ओके हेड माने होची योर माइंड एंड थॉट्स। द्वितीय हेड होची लीडर ऑफ द ग्रुप माने ए ग्रुप रो हेड। ओके वेयर रिवर बिगिन्स। ओके हेड रिवर बिगिन्स रिवर माने नदी कोठो आरंभ होची सेटा हेड एठो आरंभ होची। बी इन कंट्रोल ऑफ ए ग्रुप बी इन कंट्रोल ऑफ ए ग्रुप गोटे ग्रुप रो कंट्रोल रे आसीबा होची हेड। गो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके गो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन रे जीवा ठीक अच्छे। तो हेड हेडिंग टुवर्ड्स दिस सेंटेंस टा देखिदबा। तो कौन अच्छी ना प्रथम सेंटेंस अच्छी मिस्टर बोस विल हेड द इनिंग्स। इनिंग्स को हेड करेंगे इनिंग्स को ये जो इनिंग्स टाक सी हेड करेंगे माने कौन ना वन टा ताहले कौन हम वन टा ये ताहले तो देखिए। ओके तो कौन ना इनिंग्स टाक कौन कंट्रोल करेंगे ना कि इनिंग्स टाक सी कंट्रोल करेंगे तो कौन हम ना ये जो कौन बी इन द कंट्रोल ऑफ ए ग्रुप। ओके तो बी इन द कंट्रोल ऑफ ए ग्रुप तो कौन हम ये ना मिस्टर बोस विल हेड द इनिंग्स। मिस्टर बोस विल हेड द इनिंग्स माने इनिंग्स टाक कंट्रोल करेंगे। तापर देखे वी डिसाइडेड टू हेड फॉर होम माने घर को जीवाटा घर को जीवा घर को घर मुआ घर मुआ कौन हम गो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं कि दुई नंबरटा कौन हम दुई नंबरटा हूँ कौन गो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन घर मुआ। ओके ए थॉट केम इनटू माय हेड मो मुंड को गोटे थॉट आसिला तो मुंड को गोटे थॉट आसिला ये तीन नंबरटा कौन हम ताले ना एटा हम ना कहीं ना योर माइंड एंड थॉट गोटे थॉट आसिला मो मुंड को नहीं कि एटा हम। अच्छा तापर देखा चार नंबरटा वाटर फ्लोज फ्रॉम द हेड ऑफ ए रिवर। हेड ऑफ ए रिवर माने कौन ना एटा हम कौन वेयर रिवर बिगिन्स है ना नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए द सेरिमनी वाज अटेंडेड बाय हेड्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम 11 कंट्रीज। 11 कंट्रीज हेड माने आसिले हेड माने किए माने माने ग्रुप रो हेड माने लीडर ऑफ ग्रुप है ना नहीं। लीडर ऑफ ग्रुप हम यस और नो तेणु ये लीडर ऑफ ग्रुप हम तेणु माने कंट्री आसिले यही भाव में तुम लिखिदेव केमती लिख ना एटा ए मीनिंगटा कौन हम ना 3II एमती लिखिदेव माने मैच द फॉलोइंग जमती लेख ठीक अच्छे। तेणु चलवा देखा ये रिपोर्ट राइटिंग कौन अच्छी। एज ए न्यूज़ पेपर रिपोर्टर राइट ए रिपोर्ट ऑन मैनकाइंड्स इंडिफरेंस टू आवर अर्थ इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो न्यूज़ रिपोर्टर भाव में आम कौन करवा ना गोटे लिखा न्यूज़ रिपोर्ट गोटे लिखा राइट ए रिपोर्ट ऑन मैनकाइंड्स माने मानविकता मनीष मैनकाइंड्स इंडिफरेंस टू आवर अर्थ को माने भल भाव में बुझी पारना ये अर्थ को भल भाव में बुझी पारना अर्थ रो नुकसान करूचंती। तो माने इंडिफरेंट दे आर इंडिफरेंट। ओके दे आर इंडिफरेंट टू आवर अर्थ। तो रिपोर्ट ऑन मैनकाइंड्स मैनकाइंड माने कौन मैनकाइंड माने लोक माने कौन मैनकाइंड माने लोक माने ठीक अच्छे। मैनकाइंड्स इंडिफरेंस टू आवर अर्थ सो इंडिफरेंट टू आवर अर्थ रे देखो प्लांट अच्छंती एनिमल अच्छंती तेणु अर्थ रे समस्त को समान सुविधा सुजोग देवा कथा किंतु मनीष आज कौन करुच्ची ना निजे बंचिबा पाई निजे स्वार्थपर हेई कौन करुच्ची अर्थ रो सब किछि नष्ट कर दउची नहीं ता ऊपर गोटे रिपोर्ट लिखिबो। तो रिपोर्ट रो टाइटल कौन दबो ओके रिपोर्ट रो टाइटल दबो कौन ना एटा दबो मैनकाइंड्स इंडिफरेंस टू अर्थ मैनकाइंड्स इंडिफरेंस टू अर्थ। ओके तापर देखो आ गोटे अच्छी एज ए सेक्रेटरी ऑफ साइंस सोसाइटी ऑफ योर कॉलेज राइट ए रिपोर्ट ऑन इट्स एक्टिविटीज फॉर द करेंट सेशन। तो साइंस सोसाइटी रो तुम हो सेक्रेटरी तुम कॉलेज रो तेणु तुम गोटे रिपोर्ट लिखियो कौन कौन एक्टिविटीज होता साइंस सोसाइटी रो कौन कौन जमती कि साइंस एग्जिबिशन होता कि गोटे हेल्थ कैंप होता कि गोटे प्रैक्टिकल होता
या कौन कौन एक्टिविटी गोटे डिबेट होता ये गोटे पर गोटे एक्टिविटीज गुड़ाक लिख ठीक अच्छे ये रिपोर्टा दबार ना कौटी दबार ना लिखाई कि दबार ना कौटी ना टू द न्यूज पे रिपोर्टर नुह न्यूज रिपोर्ट नुह तेणु डायरेक्ट कौन कर टाइटलटा लिखिदेव टाइटलटा कौन ना कौन यस एक्टिविटीज ऑफ साइंस सोसाइटी 2022-23 एक्टिविटीज ऑफ साइंस सोसाइटी 2022-23 लिखिदेकरी तुम रिपोर्टा को लिख मुझे तुमको बतई देती तुम रिपोर्ट राइटिंग केमती लिखा जाए देखिदेव मेक ए नोट्स नोट मेकिंग देख पिला माने नोट मेकिंग धर नोट मेकिंग आउटलाइन फॉर्म रे केमिति तमे गोटे आउटलाइन फॉर्म रे देख तुम्हें केमिति नोट मेकिंग देख आउटलाइन फॉर्म कथा कही तुमको देखे दूची एसे रे जो आउटलाइन देती देख एसे रे जेमिति आउटलाइन देनी कि देख आउटलाइन गुड़ाक देती इंट्रोडक्शन तापर हाइफेन देकी डेफिनेशन ओके हाइफेन देकरी ये देखी तेणु तुम्हें भी यही भूली कौन कर सपोज प्रथम हूँ पॉइंटा हूँ इंट्रोडक्शन ठीक अच्छे तापर तुम्हें ये जो प्रथम पॉइंट रे जदि पॉइंट को रिलेट करी किसी अच्छे हाइफेन देकी तुम्हें लिखिपर खाली वर्ड्स गुड़ाक इंपोर्टाट हेडिंग गुड़ाक लिखिपर माने फुल चूज करी लिखिब माने माने जमीती कि तुमको कहगला बगीचा जाकि फुल आने फुल चूज करी आनिब ठीक अच्छे तापर लिख इंपोर्टाट वर्ड्स गुड़ा लिख तापर जदि सब पॉइंट अच्छी ताले ए करी सब पॉइंट मध्य लिख ठीक अच्छे तेणु ये मु कहीदे गोटे पाराग्राफ आम देखीदे तापर आग को जीवा कहीं अच्छा तो तुम्हें माने जदि बोर हो ताले लिख बोर हबार ना कहीं परीक्षा पाखे आसला देख पूरा 100 मार्क क्वेश्चन देख म्यांमार सिट्स एट द क्रॉस रोड्स ऑफ एशिया's great civilization of India and China and looks out onto the vast Indian Ocean next to Thailand माने म्यांमार गोटे देश म्यांमार सिट्स एट द कौटी अच्छी म्यांमार कौटी अच्छी क्रॉस रोड्स ऑफ एशिया's great civilizations इंडिया आउ चाइना मध्य अच्छी म्यांमार एंड लुक्स आउट onto the vast Indian Ocean भारत महासागर सहित लिंक अच्छी one of the Southeast Asia's largest and most diverse countries. Myanmar stretches from the sparkling islands of the Andaman Sea in the south right up into the eastern Himalayan mountain range. Okay. तो म्यांमार रो कौन कहूँ म्यांमार रो लोकेशन उपर कहूँ लोकेशन म्यांमार रो लोकेशन ओके म्यांमार रो जोग्राफी आलोचना तेणु कौन लिख ना 1 लिखिकी तुम्हें लिख लोकेशन कौन लिख लोकेशन 1 लिखी लोकेशन लिख लोकेशन रे आमे कौन देखिले ना कौन देखिले ना क्रॉस रोड्स ऑफ एशिया कौट लिखा सीट्स ओके ये लिखिदेव कौन ए रे लिखिदेव सीट्स एट द क्रॉस रोड्स ऑफ एशिया ओके क्रॉस रोड्स ऑफ इंडिया एंड चाइना लिखिदेव क्रॉस रोड्स ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड चाइना लिखिदेव क्रॉस रोड्स ऑफ माने पॉइंट वाइज खाली लिख पॉइंट वाइज बी रे कौन लोकेशन रे आउ कौन अच्छी कौन ना इट इज लोकेशन वाइज कौटी अच्छी ना देख स्ट्रेच फ्रॉम द एटी अच्छी वन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया's लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज ओके एंड म्यांमार स्ट्रेच फ्रॉम द स्पार्कलिंग आइलैंड ऑफ अंडमान सी इन द साउथ ये लिखिदेव लोकेशन कौन लोकेशन लिखिदेव हाइपेन देखिए लिखिदेव कौन ना आइलैंड्स ऑफ अंडमान सी ओके इन द साउथ अंडमान सी इन द साउथ तापर लिखिदेव आउ गोटे हाइपेन देखिरी कौन राइट अप इनटू द ईस्टर्न हिमालयन माउंटेन रेंज लिखिदेल ठीक अच्छे तेणु यही भाव में पॉइंट आउ सब पॉइंट करी तुम लिख एवं यार जो माने लिखि सारापर आगे पॉइंट सब पॉइंट ऊपर टाइटल लिखिकी टाइटल लिखिदेकरी हाइपेन देखी छाड़ी देथिबो पॉइंट नोट्स कलापर नोट मेकिंग कलापर तुम मैंने प्रत्येक पाराग्राफ नोट मेकिंग कर तेणु करला तुम कौन कर टाइटल दब आ टाइटलटा कौन हम ना टाइटलटा हम कौन ना म्यांमार ओके सिविलाइजेशन ऑफ म्यांमार ठीक अच्छे अच्छा तेणु यही भाव में नोट मेकिंग कर प्रत्येक पाराग्राफ कर ठीक अच्छे अच्छा
तापर जीवा समराइजिंग समराइजिंग कौन करिवो ना नोट मेकिंग जहाँ हेइथिबो ताकू टिके जोड़िबो जोड़ी जोड़ी करी तमे समराइजेशन करिवो समराइजेशन करिवो जोड़ी जोड़ी करी जेमिति फूल गुडी को तोली आनलो ताकू गोटे हार बनेलो सेमती जोड़ी करी से पॉइंट गुडी को जोड़ी करी टिके ग्रामाटिकल लगे कि तमे कौन गोटे हार कर दबो अर्थात समराइज कर दबो समराइज रे मध्य टाइटल लिखि दबो बहुत इजी पिला माने अच्छा एसे देखिबा एसे को कौन करिवो मु तुमको सिखै दिली सकाळे एसे दीटा एसे आसीची गोटे होची एडवर्टाइजिंग आ गोटे होची एनवायरमेंटल पोल्यूशन ओके तेणु तुम निहाती एनवायरमेंटल पोल्यूशन को जीव भल लिखी हम एडवर्टाइजिंग भी भल लिखी हम तो यही जो पॉइंट गुड़िक अच्छी पिला माने ए पॉइंट गुड़ी माने टिके चिंता करके तुम लिख इंट्रोडक्शन ओके डेफिनेशन इट्स इंपोर्टेंस इन टुडेज वर्ल्ड आजिका दुनिया रे ट्रेड एंड कॉमर्स रे एडवर्टाइजिंग केमिति इंपोर्टेंट ओके मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग केते प्रकार एडवर्टाइजिंग अच्छी जमती कि टीवी एडवर्टाइजिंग किंबा न्यूज़ पेपर एडवर्टाइजिंग किंबा माने पेंटिंग एडवर्टाइजिंग ओके तो कंप्यूटर इंटरनेट एडवर्टाइजिंग बहुत किसी अच्छी तो यूजफुलनेस कौन दरकार यूजफुलनेस माने व्यवहार कौन व्यवहार एडवर्टाइजिंग व्यवहार और हार्मफुल इफेक्ट खराब इफेक्ट कौन पड़ो एडवर्टाइजिंग तापरे कंक्लूजन नहीं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत इजी इंट्रोडक्शन लिखिदेल तापरे व्हाट इज इट एंड कंसर्न इट हैज कॉज्ड तो कौन एटा एनवायरमेंट पोल्यूशन कौन आउ कौन कारण तार कारण गुड़िक कौन 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 वेरियस काइंड ऑफ अच्छी पोल्यूशन एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन नहीं कि तार कारण गुड़िक लिखिबो एवं तार हार्मफुल इफेक्ट्स बा प्रभाव गुड़िक लिखिबो और कौन केमिति पोल्यूशन रक्षा पाए रिमेडीज लिखिबो तापरे कंक्लूजन बुझिला तापर देखिबा एठी करेक्ट द एरर आमे करिबा ए करेक्ट द एरर देखिबा 10टी एरर अच्छी 10टी एरर को करिबा ठीक अछि देखो एक्सेप्ट फॉर लिटिल स्कूलिंग फॉर सब बेले देख फॉर लिटिल माने पूरा नाही स्कूलिंग ए लिटिल हम ये कौन हम ए लिटिल हम कौटे बस ए लिटिल फॉर ए लिटिल हम ठीक अच्छे ये एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल स्कूलिंग ओके माने किछि माने जाइथिला स्कूलिंग आ खाली लिटिल हेले नो माने किछि नाही लिटिल थिंग्स आई सो लिटिल ओके लिटिल वाटर देयर इज लिटिल वाटर माने जमा नाही पानी ए लिटिल माने किछि अछि सी हैड नो फॉर्मल एजुकेशन तार कोनोसी फॉर्मल एजुकेशन नथिला ओके जेमति कि आमे रेगुलर स्कूल जाऊ हर माइंड हैड नॉट गॉन गॉन इन द एजुकेशन प्रोसेस गॉन थ्रो सब बेले देखियो गॉन विल बी फॉलोड बाय थ्रो ओके थ्रो THROUGH आउ थे लिखि दूची TH ओके THROUGH थ्रो गॉन थ्रो द एजुकेशनल प्रोसेस ओके सी केम टू अस आम मान पाक आसला एज ए अनसोफिस्टिकेटेड एज ए कौन हम कि रे एज आर्टिकलटा कौन हम ये एज यू अच्छी AEIOU कौन हम ये एन ओके एन हम ही आर्टिकल देखु ओके एन अनसोफिस्टिकेटेड गर्ल गोटे अनसोफिस्टिकेटेड गर्ल अज्ञ गर्ल भार मूर्ख गर्ल भाव आसला apparently with hardly some hardly पाखरे hardly followed by any with hardly any of the complexes which are said to be so common now आजिकल जमती कि बहुत माने कॉम्प्लेक्स देखा जाउची मनुष्य भितर ता भितर कौन कॉम्प्लेक्स नथिला कॉम्प्लेक्स माने बहुत कौन अहंकार फंकार सेटा नथिला सी नेवर एंटायरली lost okay entirely lost that okay तो she never entirely lost that girl look okay एटी गर्ल लुक नहीं कौन हम एटी एडजेक्टिव हम कौन गिरलिश लुक ओके गिरलिश ओके SH गिरलिश लुक गर्लिश सी नेवर एंटायरली लॉस्ट एटी लूजेस लॉस्ट हम never entirely lost the girlish look but she grew into a woman
as she grew into a woman her eyes acquired a depth तार आखि बहुत सुंदर हो गला वुमेन जिते बड़े हो गला तो हर आईज एक्वायर्ड ए डेप्थ एंड ए फायर गिविंग द impression of steel pools behind which storms raged. She was not a yes she was not a type of modern girl. She was not the type of modern girl with the modern girls habit okay. It is type of modern girl with the modern girls habit I apostrophe s lagibo habits and lack of pose, yet she took easily enough to modern ways. तथापि से आधुनिककरण को आपणैला. she took easily enough to modern ways ways okay. But essentially किंतु दरकारी से she was an Indian girl. सी होचंती जो Indian girl से थिले and more particularly a Kashmiri girl. से Kashmiri girl sensitive and proud. से थिले sensitive and proud, childish हबनी एटी चाइल्ड लाइक हम कौन हम चाइल्ड लाइक चाइल्डिश टा नेगेटिव टर्म चाइल्ड लाइक एंड ग्रोन अप फुलिश एंड वाइज हम. ठीक अच्छे बुझीगल पिला माने आमे माने पूरा क्वेश्चन टी को आमे बुझिलु पूरा लास्ट पर्यंत. समस्ते धैर्य धरिकी बसथिबार समस्त को धन्यवाद. बेस्ट ऑफ लक एग्जाम पाई पुणी आमे माराथन नहीं आसवा. थैंक यू वेरी मच. वंदे उत्कल जननी.